हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग EPack प्रीफैब का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये PEB सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने PEB इंडस्ट्री का टॉप डाउन एनालिसिस किया था। वी अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज PEB, व्हाट ऑल आर द ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द PEB इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको इंडस्ट्री लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए देन आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैंने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Now, coming to EPack, company operates into two main segments. One is prefab business, which is PEB wala segment, and other is EPS shape molding products. Over the period, company has been focusing on the PEB side of the business. It is quite evident from the graph also. 67% used to be the contribution of revenue from PEB business, जो बढ़कर अभी 82% हो गया है। Q2 FY26 का जो कॉल हुआ था उसमें कंपनी ने बोला दैट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो their focus would be on the PEB side of the business. So what exactly is PEB? बेसिकली PEB एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं PEB के, उनका मैन्युफैक्चरिंग आप आपके प्लांट पे करते हो। देन यू ट्रांसपोर्ट दोज डिफरेंट कंपोनेंट्स एट योर साइट एंड वहाँ पे आप उसका इंस्टॉलेशन करते हो। अनलाइक आवर ट्रेडिशनल RCC स्ट्रक्चर जहाँ पे एंड टू एंड सारे ऑपरेशंस आपके साइट पे होते हैं, PEB में स्ट्रक्चर्स का या कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है। देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड एंड इरेक्टेड और इंस्टॉल एट द साइट। PEB स्ट्रक्चर में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ योर प्राइमरी स्ट्रक्चर और द मेन फ्रेम, जो आपका बैकबोन होता है। कोई भी PEB स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो लोड बेयरिंग करता है, जो बैकबोन होता है उस स्ट्रक्चर का, दैट इज़ योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विच इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो आपके रूफ को या वॉल पैनल्स को सपोर्ट देने का काम करता है। एंड देन एट द वेरी एंड कम्स योर रूफ्स, पैनल्स एंड पार्टीशंस एक्सेट्रा, राइट। सो दीज आर दी मेन थ्री कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो PEB कंपनी के प्लांट में होता है। ओके, then if we look at all are the stages in the manufacturing of PEB, then first phase is your conceptualization and design, जिसमें आप PEB का जो आपका बिल्डिंग रहेगा, how exactly it is going to look like, that design and conceptualization you do in the first phase. second phase में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो आपके प्लांट में, एंड एट द सेम टाइम पैरेलली आप आपका साइट रेडी कर सकते हो फॉर इंस्टॉलेशन। एंड लास्ट फेज इज योर इंस्टॉलेशन, जो भी आपने कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किए उनको आप शिफ्ट करते हो आपके साइट पे एंड उसका इंस्टॉलेशन करते हो। नाउ व्हाई PEB इज कंसिडर्ड टू बी बेटर एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल RCC स्ट्रक्चर? तो उसके दो मेन रीजन है। फर्स्ट इज योर फास्टर कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने देखा दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन हैपन एट योर प्लांट एंड एट द सेम टाइम आप आपका कंस्ट्रक्शन साइट रेडी कर सकते हो। कंसिडरिंग ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है, देर इज अ टाइम सेविंग एलिमेंट, राइट, एंड यू एंड अप सेविंग अराउंड 40 to 50% ऑफ द टाइम व्हेन वी कंपेयर इट विद द ट्रेडिशनल RCC स्ट्रक्चर। देन देर इज अ कॉस्ट सेविंग एलिमेंट ऑल्सो। PEB के जो कंपोनेंट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे होता है, वेयर यू कैन हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मशीन्स, ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग, and the number of employees or the manpower that you need for PEB is lesser as compared to the manpower required in case of traditional RCC, and that's where you end up saving 15 to 35% of your cost also. So when we compare PEB with RCC structure, PEB is faster as well as cost effective, and hence we are seeing increasing penetration of PEB in industrial structures at least. Now, coming back to the business segments, first is prefab business or PEB business. Now thing is that even if there is some bifurcation or sub-segmentation, all are nothing but PEB only. What company has done is they have divided their PEB segment into smaller sub-segment based on the size of the building and the offering. So first is pre-engineered steel building, which are multi-storied building. आपका warehouse हो गया या फिर cold storage or industrial shed, these are the multi-storied big size building. Then comes your prefabricated structure. Again, this is a PEB only, it's just that the size is smaller as compared to pre-engineered steel building. इसमें अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, देन यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट वहाँ पे सेल्स ऑफिस होता है, वहाँ पे जो लेबर होते हैं उनका कैंप होता है। सो ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर PEB ओनली, बट if when we compare it with the pre-engineered steel building, the size is smaller. Then comes the light gauge steel framing. This is again a PEB,
but with a differentiated what we can say property, that it is light in weight. Last, in this uh, PEB comes your standard modular solution. जो फर्स्ट थ्री थे दोज आर कस्टमाइजेबल, दोज आर मेड एज पर द स्पेसिफिकेशन, मेड एज पर द रिक्वायरमेंट. हाउएवर जो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशन होते हैं दोज आर स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन. इसमें पोटा केबिन्स हो गए या फिर लिफ्टेबल केबिन्स हो गए, ऑल दिस थिंग्स कम अंडर पीईबी ओनली. Now, this company has a specialized offering when it comes to PEB, that is sandwich insulated panel. So basically, when we have a PEB, walls जो होती है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स का यूज होता है. पैनल का जो आउटर लेयर होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्टील, एंड इनर लेयर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बेस्ड ऑन द योर रिक्वायरमेंट्स. अगर आप कोल्ड स्टोरेज के लिए पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हो देन योर रिक्वायरमेंट विल बी टेम्परेचर कंट्रोल. आप अगर ऐसी कोई जगह पे ये पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हो जहाँ पे फायर सेफ्टी इज मेन कंसर्न, देन द इनसाइड मटेरियल ऑफ द पैनल विल डिफर. सो ये जो डिफरेंट टाइप के पैनल्स होते हैं ये पैनल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है. इसमें PIR PUF पैनल आते हैं विच आर गुड इन थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल इंसुलेशन के लिए. सो इनका यूज़ होता है कोल्ड स्टोरेज में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में एंड वेयर हाउसेस में. देन कम्स योर रॉकवुल पैनल एंड पॉलिस्टेरिन पैनल. राइट, इन केस ऑफ रॉकवुल पैनल जो अंदर का मटेरियल होता है दैट मटेरियल इज मेड अप ऑफ रॉकवुल. नाउ रॉकवुल सुपीरियर फायर प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज, राइट, एंड साउंड इंसुलेशन के लिए भी रॉकवुल का यूज़ होता है. सो ये जो पैनल्स होते हैं इनका यूज़ आप करोगे जहाँ पे आपको नॉइज़ रिडक्शन चाहिए या फिर जहाँ पे आपको फायर सेफ्टी इज़ द मेन कंसर्न. द सेकंड सेगमेंट ऑफ द business is EPS packaging business. Now here also there are two types of offering. One is your shape molding products and other is block molding products. इसी particular यूज़ के लिए, फॉर एग्जांपल टीवी के लिए, फ्रिज के लिए या फिर वॉशिंग मशीन के पैकेजिंग के लिए आप जब यूज़ करते हो देन यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक शेप अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ योर प्रोडक्ट. अगर जो आप फ्रिज के लिए यूज़ कर रहे हो यू कैनॉट यूज़ दैट सेम फॉर योर टीवी, राइट. सो दैट डिपेंड्स ऑन द कस्टमाइजेशन एंड द रिक्वायरमेंट. एंड सेकंड इज द ब्लॉक मोल्डिंग प्रोडक्ट जिसमें इट इज़ नॉट मेड फॉर द स्पेसिफिकेशन, it is a standardized offering. You can buy that particular block and depending upon your requirement you can cut, slice, dice and use it. So mota moti there are two types of offerings that company has. One is PEB and another is EPS packaging business. Now over the period we have seen that company is not focusing on the EPS packaging business and the increasing focus of the company is towards the PEB side of the business. Now, understanding the history of the company was started in year 2000. जब कंपनी शुरू हुई उस टाइम पे पीबी बिजनेस नहीं था. द कंपनी वॉज मेनली इनटू ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस. कंपनी स्टार्टेड इट्स पीबी बिजनेस इन 2011 एंड तब से लेके अभी तक कंपनी का जो फोकस रहा है दैट हैज़ बीन टुवर्ड्स द पीईबी साइड ऑफ द बिजनेस. Now, looking at the manufacturing footprint of the company has three manufacturing plants for PEB. One is at Noida, Uttar Pradesh. Second one is at Gilot, Rajasthan, and third one is at Mambatu, Andhra Pradesh. Company still runs one EPS packaging plant that is at Noida. Company also has three design labs. One is at Noida, other is at Hyderabad, and third one is at Vizag. If you look at the client profile of the company, then company has served more than 2000 clients between FY22 to FY25. Company has completed more than 4000 projects and 40% of the revenue comes from the repeat clients. Now when we discuss any of the PEB company or PEB business, then repeat client is a good way to understand what kind of relationship company has with its clients, and it is also a good indicator about the execution capability of the कंपनी. अगर कंपनी अपना एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं करती है, इफ द एग्जीक्यूशन इज नॉट एज पर द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, देन इट इज ऑब्वियस दैट देयर वोंट बी अ रिपीट business that company would be getting from the same client. Now 40% of the revenue is coming from the repeat clients. It indicates that the company has got good execution capabilities and quality deliverables also. Some of the pristine clients that company has are Reliance, Godrej, then there is Safari, Century, GMR, Aditya Birla Group, JK Tires. Now coming to the industry, let's understand what exactly is PEB industry and what all are the growth drivers and all other nuances of the PEB industry as a whole.
पीईबी इंडस्ट्री जो होती है, इट इज़ अ प्रॉक्सी टू इंडस्ट्रियल कैपेक्स। अगर इंडस्ट्रियल कैपेक्स अच्छा चल रहा है, देन पीईबी इंडस्ट्री विल डू गुड। अगर इंडस्ट्रियल कैपेक्स ही नहीं चल रहा है, देन इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर विल बी अ स्लो डाउन इन द पीईबी इंडस्ट्री। इन 2019 to 2024, because of the COVID and other related reasons, there was no industrial capex happening, and that's where we see that the PEB industry growth was around 8%. However, after 2024, there is a good industrial capex that is happening. Lot of companies are undergoing industrial capex. There are new industries also which are emerging: solar, data centers, EVs, and there are many other industries which are evolving, and hence there is a good amount of industrial capex happening, and that's where it is expected that PB industry itself will grow in double digits. There are two main reasons for the growth of the PEB. One of the reason is the penetration potential. अगर हम लोग पीईबी का पेनिट्रेशन कंसिडर करते हैं इन इंडिया against the penetration in other countries, developed countries, then the penetration of PEB is very low in India. It was hardly 2 to 4% in 2019, and it is expected to go to 5 to 7% by FY28. Another is shift towards the organized sector. धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है पीईबी का, दैट इज टेकिंग अवे द मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर. एंड ये जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड वाला थीम है, दैट हैज प्लेड आउट इन अदर मेनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो. ज्वेलरी इंडस्ट्री देख लो, वहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट प्ले आउट हुआ था. देन इफ यू लुक एट द डेयरी इंडस्ट्री ऑल्सो एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री ऑल्सो. Now, why PEB is better as compared to RCC structure? We have already seen that, right? It is faster and cost effective. Another interesting thing to observe is जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उनका ग्रोथ एज कंपेयर टू ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ इज फास्टर. द टॉप 6 player in the industry have grown at around 11.4%, whereas industry has grew at just 8.5%. What this clearly indicates is that the organized player are taking away the market share from unorganized players. पीईबी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, देन इंडस्ट्रियल कैपेक्स इज द थिंग दैट वी नीड टू ट्रैक. अगर इंडस्ट्रियल कैपेक्स अच्छे से हो रहा है, देन इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस दैट द पीईबी इंडस्ट्री विल डू वेल. Now, if you look at the industrial capex that is happening in India, then it is almost 1.7 times higher than the capex spend that has happened between FY 2019 to 2023. Then there is a push from government also, where government is incentivizing different industries by doing PLI schemes, आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया. अगर हम लोग देखते हैं कि एंड यूजर इंडस्ट्री में ग्रोथ किस तरीके से है, सो वन ऑफ द मेन ग्रोथ ड्राइवर इज वेयर हाउस. हम लोग देख रहे हैं दैट देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कैपेक्स दैट इज हैपनिंग इन व्हेन इट कम्स टू क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स. देन डेटा सेंटर इज द बिग थीम. BESS, renewables, EV is another industry where lot of companies are doing capex. So all in all, there is a good amount of industrial capex that is happening. There is a good government push. So the industrial capex is expected to continue on the similar pace, and that's where PB industry is also expected to grow. Now, coming to the management of the company, Mr. Sanjay Singhania is the MD and CEO. He has got more than 25 years of experience. अगर हम लोग बाकी भी board of directors देखते हैं कंपनी के, then those are also having at least 2 to 3 decades of experience. Now let's try to understand what are the growth drivers. Company just inaugurated its sandwich panel line of 8 lakh square meter capacity in the month of June 2025. Then company is also doing a brownfield capex at Mambatu for PEB, and it is around 25,500 MTPA capacity. ये जो capex है, that is expected to commercialize in Q4 FY26. Then company is also doing a greenfield capex at Giloth for insulated sandwich panels, again for the 8 lakh square meter capacity, and it is expected to commercialize in Q2 FY27. Now company has got 920 crores of order book, and generally PEB के केस में this order book is expected to be executed in 7 to 8 months. For PEB industry as a whole, Q3 and Q4 are the strongest quarters in terms of the execution and in terms of the order bookings also. So company is expecting higher number of orders in Q3 and Q4 also. कंपनी राइट नाउ डज हार्डली 1.5 to 2% ऑफ द एक्सपोर्ट, बट जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स हो रहा है एट Mambatu, वेयर दे आर इंक्रीजिंग देयर पीईबी कैपेसिटी, दैट पर्टिकुलर कैपेक्स और दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी is very close to the ports, and that's where company is exploring the possibility of exports to the Middle East and African countries. Then we saw that industry itself is growing at
double digits. And most important thing is organized player are growing even faster. So अगर आपकी इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री को टेलविंड है एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर उससे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, देन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दीज कंपनीज विल कंटिन्यू टू ग्रो एटलीस्ट इन डबल डिजिट. That as we saw, company already gets around 40% of the revenue from its existing clients, and there is a possibility that company can continue to get the wallet share from its existing customer and expand its customer if it continues well with its execution. कंपनी का H1 FY26 का कॉन कॉल अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ, एंड लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द की पॉइंटर्स फ्रॉम द कॉन कॉल. ऑर्डर बुक एट द मोमेंट इज अराउंड 920 करोड़, जिसका execution timeline is around 7 to 8 months. Q3 and Q4 are usually stronger for the order booking and also for the execution. Around 45% of the revenue comes in H1 and 55% of the revenue comes in H2. Now this is the industrial level phenomenon. Most of the companies जो PEB industry में काम करती है उनका similar revenue split होता है because of the monsoon in H1. कैपेक्स के बारे में कंपनी ने बोला दैट दे आर अंडरगोइंग अ ब्राउनफील्ड कैपेक्स एट मंबातु फॉर पीबी which is expected to commercialize in Q4 FY26. Company is also undergoing another capex which is a greenfield capex at Gilod, Rajasthan for insulated sandwich panel capacity which is expected to commercialize in Q2 FY27. ये जो दोनों कैपेक्स है, ब्राउनफील्ड कैपेक्स एंड द ग्रीनफील्ड कैपेक्स, ये दोनों कैपेक्स मिला के कंबाइंड रेवेन्यू कैन बी अराउंड 550 करोड़. कंपनी सेड दैट जो बाकी उनके कॉम्पिटिटर्स है दे आर वेरी गुड विद द डिजाइन एंड द मैन्युफैक्चरिंग बट दे लैक द एग्जीक्यूशन फोकस. एज पर मैनेजमेंट दे हैव द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम व्हेन इट कंपेयर्ड विद द कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री. जो कंपनी का मंबातु का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे कंपनी इज डूइंग अ ब्राउनफील्ड कैपेक्स फॉर पीईबी, इट इज़ वेरी क्लोज टू द पोर्ट्स एंड दैट्स वेयर कंपनी इज एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी सम optionality of export put to the Middle East and African countries. At this moment, hardly 1.2, 1.5 to 2% of the revenue comes from the export. मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस मेंटेन रखा है. दे आर एक्सपेक्टिंग द मोमेंटम टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 18 to 24 months with the margins in the sustainable range of 10.5 to 11.5. The company was asked about the data center projects that it has done. So company has not done any data center PEB project as such. They have supplied the insulated panels and done the installation of the insulated panels for the data center. However, जो order pipeline है उसमें the company is expecting 1 or 2 data center related projects for the PEB. The industrial capex is happening on the southern part of the country, and in luckily इनका जो brownfield capex हो रहा है मुंबई का, that is also happening in the southern part, and that's where company is expected to get additional benefits because of the proximity with the clients. बड़े साइज के ऑर्डर्स करने के लिए कंपनी वाज नॉट क्वालिफाइड. हाउएवर, company now has proved their capabilities and now has qualified for larger projects now, and hence going forward it is expecting more larger projects. इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में कंपनी का कहना है दैट H1 was challenging but H2 is better and the momentum is expected to continue going forward. Demand is expected to come from BESS, EV, solar and data center. So competitors के बारे में कंपनी ने कहा that competitors are good with the design and the manufacturing but they lack the focus on execution. कंपनी का current market share is around 5 to 5.5%. Now coming to the risk in the business, जो EPS पैकेजिंग बिजनेस है उसमें 50 to 60% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो LG से आता है. सो देर इज अ क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क व्हेन वी कंसिडर द EPS पैकेजिंग बिजनेस. PEB as an industry is fragmented and there is an intense competition, so that's the nature of the industry. Then around 80 to 85% of your raw material is steel and there are only handful of the suppliers, so there is a risk of raw material. देन एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट डिले रिलेटेड रिस्क आर देयर. अगर आप टाइम पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करते हो विथ क्वालिटी, देन क्लाइंट विल नॉट लाइकली टू गिव यू रिपीट ऑर्डर. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इज कैपेक्स साइकिल. अगर कैपेक्स साइकिल में स्लो डाउन आता है देन दिस इंडस्ट्री एज अ होल इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन. ये हम लोगों ने होते हुए देखा है इन 2019 टू 2024 वाला साइकिल, जहाँ पे बिकॉज कोविड एंड अदर रिलेटेड इश्यूज देर वॉज अ स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल कैपेक्स एंड हेंस द इंडस्ट्री ग्रोथ ऑल्सो फ्लैटेंड आउट. जो भी ये लोग इरेक्शन का काम करते हैं, इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, दैट हैपन्स थ्रू थर्ड पार्टी. सो इफ देर इज एनी इशू और एनी डिले फ्रॉम दिस थर्ड पार्टी इरेक्टर्स, देन जो इस कंपनी का प्रोजेक्ट है दैट प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज लाइकली टू गेट डिलेड. Thank you for watching this video and I'll see you in the next one.